Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great. In this video, I have covered up the entire science and technology news for the month of December 2025 with the top 40 MCQs and one liner explanation. So we're going to revise the whole things very quickly. Let's start. Yeah. So the first question is pathogeny developed by the Ministry of Science and Technology is primarily used for भारत द्वारा हाल ही में विकसित पाथजेनी का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है. So option C, predicting drug unbinding from protein targets. प्रोटीन लक्ष्यों से दवा के अलग होने की भविष्यवाणी करना. Let's talk about more about this news. Pathogeny is an open source software developed under the Ministry of Science and Technology. Pathogeny विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्रालय के अंतर्गत विकसित एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. It accelerates drug discovery by accurately predicting how drugs unbind from protein targets. ये दवाओं की प्रोटीन लक्ष्यों से अलग होने के तरीके का सटीक अनुमान लगाकर दवा खोज प्रक्रिया को गति प्रदान करता है. The tools reduces simulation distortions, improving the reliability of computational results. ये उपकरण सिमुलेशन विकृतियों को कम करता है जिससे गणना परिणामों की विश्वसनीयता में सुधार होता है. Next question we have the Indian AI Research Organization IAIRO will be established at which location? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन IAIRO की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? या तो ऑप्शन C is correct, that is Gift City, Gujarat. What is the important points for this news? Come on, go ahead with this. Gujarat will set up the Indian AI Research Organization IAIRO at Gift City. गुजरात गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुष्ठान संगठन IAIRO की स्थापना करेगा. The organization will start operation from January 2026. यह संगठन जनवरी 2026 से परिचालन शुरू करेगा. It will establish under a public-private partnership PPP model. इसकी स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत की जाएगी. The project involves an estimated funding of rupees 300 crore. इस परियोजना में अनुमानित 300 करोड़ की धनराशि शामिल है. Which disease is treated using the one-time gene therapy Itolizumab? Itolizumab नामक एक बार की जीन थेरेपी से किस बीमारी का इलाज किया जाता है? Yes, the correct option we have is option B, spinal muscular atrophy. Let's see about the important points. Sheikh Khalifa Medical City, SKMC, Abu Dhabi has become the first hospital in the world to administer ITVISM MA, a one-time gene therapy. ITVISMA, a one-time gene therapy. अबू धाबी स्थित शेख खलीफा मेडिकल सिटी SKMC दुनिया का पहला अस्पताल बन गया है जहां ITVISMA नामक एक बार की जीन थेरेपी दी जा रही है.
Itolizumab is used for the treatment of a spinal muscular atrophy (SMA), a rare and life-threatening genetic disorder. Itolizumab का उपयोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के उपचार के लिए किया जाता है, जो एक दुर्लभ और जानलेवा आनुवंशिक विकार है. The therapy works by addressing the root genetic cause of the disease instead of managing symptoms. यह चिकित्सा रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने के बजाय रोग के मूल आनुवंशिक कारण को संबोधित करके काम करती है. ओके, नेक्स्ट. इसरो श्रीहरिकोटा में तीसरा प्रक्षेपण पैड बनाने की योजना क्यों बना रहा है? Why is ISRO planning a third launch pad at Sriharikota? So the correct option is option B. To support heavier satellites and bigger launch vehicles. अधिक भारी उपग्रहों और बड़े प्रक्षेपण यानों को सहारा देने के लिए. Let's discuss more about this. Detailed explanation. ISRO plans to commission a third launch pad at Sriharikota within the next 4 years. ISRO की योजना अगले 4 वर्षों के भीतर श्रीहरिकोटा में तीसरा प्रक्षेपण पैड शुरू करने की है. The new launch pad will support heavier satellites and larger launch vehicles. नया प्रक्षेपण पैड अधिक भारी उपग्रहों और बड़े प्रक्षेपण यानों को सहारा देने में सक्षम होगा. It will enhance India's overall space launch capacity and flexibility. इससे भारत की समग्र अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता और लचीलापन बढ़ेगा. Next news we have is which Indian startup has developed India's first indigenous MRI scanner? किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है? So the option B is correct. Voxel Grids. Detailed explanation. Voxel Grid is a Zoho-backed Indian startup. Voxel Grid एक भारत स्टार्टअप है जिसे जोहा का समर्थन प्राप्त है. It has developed India's first indigenous MRI scanner. इसने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है. It supports the Make in India initiative in the medical technology sector. यह चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है. Next question in front of you is the Param Rudra supercomputer inaugurated at IIT Patna is a part of which national initiative? IIT पटना में उद्घाटित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है? So the option B, National Supercomputing Mission. राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन. Important points related to this news. The IIT Patna has inaugurated Bihar's first परम रुद्र सुपर कंप्यूटर. IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है. The launch marks a significant milestone under the National Supercomputing Mission (NSM). यह प्रक्षेपण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. The supercomputer will enhance advanced research and innovation in the region. यह सुपर कंप्यूटर इस क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा. Next question is, what is the primary function of AILA developed by IIT Delhi? IIT दिल्ली द्वारा विकसित AILA का प्राथमिक कार्य क्या है? So the option C is correct. Autonomous design and analysis of laboratory experiments. प्रयोगशाला प्रयोगों का स्वायत्त डिजाइन और विश्लेषण.
IIT Delhi has developed AILA, Artificially Intelligent Lab Assistant, using an agentic AI framework. IIT Delhi ने agentic AI फ्रेमवर्क का उपयोग करके AILA विकसित किया है. Artificially Intelligent Lab Assistant. AILA can autonomously design, conduct, and analyze real laboratory experiments. AILA वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों को स्वायत्त रूप से डिजाइन, संचालित और विश्लेषण कर सकती है. It reduces human intervention by making independent experimental decision. यह स्वतंत्र प्रयोगात्मक निर्णय लेकर मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है. Next question is Russia's proposed nuclear power plant on the moon is probably intended to support चंद्रमा पर रूस द्वारा प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का समर्थन करना है. What is the correct answer? Yeah, option C is the correct answer. Long-term lunar exploration and ILRS. दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण और ILRS. I'm going to talk about more about this news. Russia plans to build a nuclear power plant on the moon by 2036 as announced by Roscosmos. रॉसकॉस्मोस द्वारा घोषित जानकारी के अनुसार रूस की योजना 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की है. The plant will support long-term lunar exploration and human presence. यह संयंत्र चंद्रमा पर दीर्घकालिक अन्वेषण और मानव उपस्थिति का समर्थन करेगा. It will provide energy at the International Lunar Research Station (ILRS). यह अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा. Next question is what is the primary mission of NASA's Maven spacecraft? NASA के मैविन अंतरिक्ष यान का प्राथमिक मिशन क्या है? So the option B, to study Mars atmosphere and its evolution. मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसके विकास का अध्ययन करने के लिए. Important points. NASA has temporarily lost contact with the Mars atmosphere's volatile evolution orbiter. NASA का माविन मंगल ग्रह का वायुमंडल और वाष्पशील विकास ऑर्बिटर से अस्थायी रूप से संपर्क टूट गया है. Marvin has been studying Mars' upper atmosphere and climate evolution for over 10 years. Marvin पिछले 10 वर्षों से मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और जलवायु विकास का अध्ययन कर रहा है. The spacecraft reportedly showed unusual rotation attitude ratios. रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष यान में असामान्य घूर्णन स्थिति संबंधी समस्याएं देखी गई. Next question we have is which rocket was used by ISRO to launch the Bluebird Block 2 satellite? ISRO ने Bluebird Block 2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? Yeah, so the option C is correct. That is LVM-3 Bahubali. Let's discuss more about this news. ISRO launched the Bluebird Block 2 communication satellite using the heavy lift LVM-3 Bahubali rocket. ISRO ने भारी क्षमता वाले LVM-3 बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया.
The mission aims to provide direct broadband connectivity to smartphones worldwide. इस मिशन का उद्देश्य विश्व भर के उपकरणों के सीधे ब्रॉडबैंड मॉड्यूल प्रदान करता है. It marks the heaviest payload ever launched by India from Indian soil, showing ISRO's advanced launch capability. ये भारत द्वारा भारतीय धरती से अब तक का सबसे भारी पेलोड प्रक्षेपण है, जो इसरो की उन्नत प्रक्षेपण क्षमता को दर्शाता है. Next news is the Center of Excellence for CRISPR Innovation and Translation COE-CIT is a partnership between which institutions? Center of Excellence for CRISPR Innovation and Translation COE-CIT किन संस्थानों की साझेदारी है? So just tell me the answer. So the option C is correct. What is the answer? C. GNCASR, Bangalore and CRISPR bits. Important points. A letter of intent (LOI) has been signed to set up the Center of Excellence for CRISPR Innovation and Translation. CRISPR Innovation and Translation के लिए उत्कृष्ट केंद्र COE-CIT स्थापित करने के लिए आश्रय पत्र पर साइन किए गए. The center is established through a partnership between GNCASR Bangalore and CRISPR bits. यह केंद्र बैंगलोर स्थित GNCASR और CRISPR bits के बीच साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा. It aims to promote advanced CRISPR-based research in gene editing and biotechnology. इसका उद्देश्य जीन संपादन और जैव प्रौद्योगिकी में उन्नत CRISPR आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना है. Why does exoplanet PSR J2322 to 2650b have a lemon-like shape? So the option B, exoplanet PSR J2022 to 2650b का आकार नींबू जैसा क्यों है? So the option B is correct because of strong tidal forces from a nearby pulsar. पास के पल्सर से उत्पन्न प्रबल ज्वारीय बलों के कारण. Important points. Astronomers using the James Webb Space Telescope (JWST) discovered a lemon-shaped exoplanet named PSR J2322 to 2650b. जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने PSR J2322 to 2650b नामक एक नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट की खोज की है. The planet orbits extremely closer to pulsar, a rapidly spinning neutron star with intense gravity. यह ग्रह एक पल्सर के बेहद करीब परिक्रमा करता है, जो तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाला एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है. Strong gravitational direct forces from the pulsar distort the planet's shape, making it highly elongated. पल्सर से उत्पन्न होने वाले प्रबल गुरुत्वाकर्षण ज्वारीय बल ग्रह के आकार को विकृत कर देते हैं, जिससे यह अत्यधिक लंबा हो जाता है. The discovery challenges existing theories about planetary structure, stability and composition under extreme conditions. यह खोज चरम परिस्थितियों में ग्रहों की संरचना, स्थिरता और संरचना के बारे में मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है. Next news is the drag parachute test for the Gaganyaan crew module was conducted at which facility? Gaganyaan crew
मॉड्यूल के लिए ड्रॉप पैराशूट परीक्षण किस सुविधा केंद्र में आयोजित किए गए थे? Yeah, so the correct option we have is option B, that is DRDO's RTRS facility Chandigarh. DRDO की RTRS सुविधा चंडीगढ़. ISRO successfully completed drop parachute qualification test for the Gaganyaan crew module. ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉप पैराशूट योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. Tests were conducted at DRDO's Rail Track Rocket Sled RTRS facility Chandigarh. परीक्षण चंडीगढ़ स्थित DRDO की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड RTRS सुविधा में आयोजित किए गए. Drop parachutes are a key part of the parachute-based deceleration system. Drop parachute आधारित मंदन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. Next news is, what is the main objective of ISRO's Respond Basket 2025? ISRO के Respond Basket 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? So we have the option C, to align academic research with ISRO's space mission. शैक्षणिक अनुसंधान को ISRO के अंतरिक्ष अभियानों के साथ संरेखित करने के लिए. Important point, ISRO has launched Respond Basket 2025 to invite mission-oriented research proposals from Indian Academy. ISRO ने भारतीय शिक्षाविदों से मिशन उन्मुख अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए Respond Basket 2025 की शुरुआत की है. The initiative encourages collaboration between ISRO and universities or research institutions. इस पहल से ISRO और विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है. It aims to align academic research with ISRO's current and future space mission. इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को ISRO के वर्तमान और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के साथ संरेखित करना है. Next question we have, which launch vehicle will ISRO use for LMV3 M6 mission scheduled in December 2025? दिसंबर 2025 में निर्धारित LVM3 M6 मिशन के लिए ISRO किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? Yeah, so the option C is correct, LVM3. ISRO has scheduled LVM3 M6 mission for 24 December 2025 at 8:54 a.m. according to Indian Standard Time. ISRO ने LVM3 M6 मिशन को 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 बजे भारतीय समयानुसार निर्धारित किया है. The launch will take place from सतीश धावन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा. यह प्रक्षेपण सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से होगा. LVM3, India's most powerful rocket, will be used for the mission. इस मिशन के लिए भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 का इस्तेमाल किया जाएगा. The mission aims to deploy a US communication satellite. इस मिशन का उद्देश्य अमेरिका द्वारा स्थापित एक संचार उपग्रह को तैनात करना है. Michaela Bentos is used to make history by becoming the first wheelchair user to travel to space on which mission? माइकला बेंटोस किस मिशन पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनकर इतिहास रचने जा रही है? So the option C is correct, Blue Origin NS-37. Blue Origin NS-37.
German aerospace engineer Michaela Bentos will become the world's first wheelchair user to travel to space. German aerospace engineer मिकाइला बेंटोस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनेगी. She will fly aboard Blue Origin's NS-37 मिशन. वो ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर उड़ान भरेंगी. The mission represents a major step forward for inclusion and accessibility in human space flight. यह मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान में समावेश और पहुंच की दिशा में एक बड़ा कदम है. It highlights growing diversity in STEM fields and space exploration. ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती विविधता को उजागर करता है. The Indian team winning concept at NASA Space Apps Challenge 2025 was aimed at NASA Space Apps Challenge 2025 में भारतीय टीम की विजेता अवधारण का उद्देश्य था. Option C, providing broadband access to underserved population. वंचित आबादियों को ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना. Important points. An Indian team won a top global honor at the NASA Space Apps Challenge 2025. एक भारतीय टीम ने NASA Space Apps Challenge 2025 में शीर्ष वैश्विक सम्मान जीता. The award-winning idea focused on a satellite-based internet concepts. पुरस्कार जीतने वाले इस विचार का केंद्र बिंदु उपग्रह आधारित इंटरनेट की अवधारणा थी. The solution aims to connect over 700 million people lacking broadband access. इस समाधान का उद्देश्य ब्रॉडबैंड सुविधा से वंचित 700 मिलियन से अधिक लोगों को जोड़ना है. Maitri 2, India's next generation Antarctic research station is expected to be completed by which year? भारत का अगली पीढ़ी का अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकेंड किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? Should option C is correct. 2032. Important points. Matri 2 will be India's next generation permanent research station in Antarctica. Matri सेकेंड अंटार्कटिका में भारत का अगली पीढ़ी का स्थायी अनुसंधान केंद्र होगा. Expected to complete it by 2032. इसके 232 तक पूरा होने का उम्मीद है. The Ministry of Earth Science has approved rupees 29.2 crore for the pre-investment activities. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए 29.2 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. Which organization developed India's first indigenous 64-bit microprocessor Dhruv 64? भारत का पहला स्वदेशी 64-bit microprocessor Dhruv 64 किस संगठन ने विकसित किया? Should option C, that is CDAC. India has launched Dhruv 64, its first fully indigenous 1.0 GHz 64-bit dual-core microprocessor. भारत ने अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 GHz 64-bit dual-core microprocessor Dhruva 64 लॉन्च किया है. It has been developed by CDAC under the Microprocessor Development Program. इसे माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत CDAC द्वारा विकसित किया गया है. Dhruva 64 boosts India's self-reliance in semiconductor technology. Dhruva 64 semiconductor technology में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है. Next question is Supernova brain stent clinical trial conducted by AIMS Delhi is known as दिल्ली एम्स द्वारा आयोजित सुपरनोवा ब्रेन स्टेन क्लिनिकल ट्रायल को किस नाम से जाना जाता है? So option B is correct, that is grassroots trial, जमीनी स्तर का परीक्षण.
Important points. AIMS Delhi conducted India's first dedicated clinical trial of an advanced brain strain called Supernova. एम्स दिल्ली ने सुपरनोवा नामक एक उन्नत ब्रेन स्ट्रेन का भारत का पहला विशेष नैदानिक परीक्षण किया. The trial was carried out under the grassroots clinical trial. The परीक्षण grassroots clinical trial के तहत किया गया था. Results showed excellent safety and effectiveness in treating severe strokes. परिणामों से गंभीर स्ट्रोक के उपचार में उत्कृष्ट सुरक्षा और प्रभावशीलता प्रदर्शित हुई. The success of the trial led to the approval by CDSCO, Central Drug Standard Control Organization. परीक्षण की सफलता के परिणामस्वरूप CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ. माविन अंतरिक्ष यान का प्राथमिक मिशन क्या है? What is the primary mission of the MAVIN spacecraft? So the option B, study Mars, atmosphere and climate evolution. मंगल ग्रह के वायुमंडल और जलवायु के विकास का अध्ययन करें. Important point, NASA has temporarily lost communication with the Marvin spacecraft orbiting Mars. नासा का मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे मेविन अंतरिक्ष यान से अस्थायी रूप से संपर्क टूट गया है. Marvin, Mars atmosphere and volatile evolution has been studying Mars for over 10 years. Marvin, Mars atmosphere and volatile evolution पिछले 10 वर्षों से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहा है. The communication loss occurred when the spacecraft passed behind Mars. मंगल ग्रह के पीछे से गुजरते समय अंतरिक्ष यान के साथ संचार बाधित हो गया है. Next question is AIM-NASH recently qualified by the US FDA is primarily used to. AIM-NASH जिसे हाल में ही US FDA द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है. So option B is correct. Assess severity of fatty liver disease using AI. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वसायुक्त यकृत रोग की गंभीरता का आकलन करें. The US Food and Drug Administration (FDA) has qualified AIM-NASH, the first AI-based tool for assessing severe fatty liver disease. अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने गंभीर फैटी लीवर रोग का आकलन करने के लिए पहले AI आधारित उपकरण AIM-NASH को मान्यता दी है. AIM-NASH uses artificial intelligence to analyze liver biopsy images with greater consistency and accuracy. AIM-NASH कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लीवर बायोप्सी छवियों का विश्लेषण अधिक स्थिरता और सटीकता के साथ करता है. The tool helps reduce variability in disease assessment across clinical trials. यह उपकरण नैदानिक परीक्षणों में रोग मूल्यांकन में भिन्नता को कम करने में मदद करता है. Next question is, when and where is the 11th IISF being held? 11वीं IISF का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है? Yeah, so the option A is correct. 6 December 2025 in Panchkula, Haryana. 11th India International Science Festival IISF starts 6 December 2025 in Panchkula, Haryana. 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 6 दिसंबर 2025 को पंचकुला हरियाणा में शुरू होगा. थीम विज्ञान से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू साइंस. विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान के माध्यम से समृद्धि. Features 150 plus technology session and 40,000 plus participants. इसमें
150 से अधिक प्रौद्योगिकी सत्र और 40,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। फोकस ऑन साइंस लेड ग्रोथ फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करें। So the question is, which space telescope's data was used to discover the spiral galaxy Alaknanda? अलकनंदा नामक सप्रेल आकाशगंगा की खोज किस आंतरिक दूरबीन के डेटा का उपयोग करके की गई थी? So we have the option B, that is James Webb Space Telescope. Two Indian scientists, Rashi Jain and Yogesh Wadekar, discovered a spiral galaxy named Alaknanda. दो भारतीय वैज्ञानिकों राशि जैन और योगेश वाडेकर ने अलकनंदा नामक एक सप्रेल आकाशगंगा की खोज की। The discovery was made using data from James Webb Space Telescope (JWST). यह खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करने की गई थी। Alaknanda existed when the universe was only 1.5 billion years old. अलकनंदा का वास्तव तब था जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। Next question we have, Gemini 3 Deep Think mode is primarily designed to improve performance in which area? Gemini 3 का Deep Think mode मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के डिजाइन के लिए किया गया है? So the option C is correct. Complex reasoning and problem solving. जटिल तर्क और समस्या समाधान के लिए। Important points. Google has rolled out Gemini 3 Deep Think mode of AI Ultra subscriber. Google ने AI Ultra subscriber के लिए Gemini 3 Deep Think mode launch किया है। The feature is integrated with the Gemini app. ये feature Gemini app में ही एकीकृत है। It enhances advanced reasoning, problem solving and logical analysis. यह उन्नत तर्क क्षमता, समस्या समाधान, कौशल और तार्किक विश्लेषण को बढ़ाता है। Deep Think mode is designed for complex mathematics, scientific reasoning and logic-based tasks. Deep Think mode जटिल गणित, वैज्ञानिक तर्क और तर्क आधारित कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। The next question we have is, who collaborated with Niti Aayog's Frontier Tech Hub to unveil India's quantum technology roadmap? भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी रोडमैप का अनावरण करने के लिए नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के साथ किसने सहयोग किया? Yeah, the option C is correct. IBM. We'll discuss more about this. Quantum technology, computing, communication, sensing are set to transform industries and national security. Quantum प्रौद्योगिकियां कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन, उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। It aims to emerge as a global leader in the quantum domain. भारत का लक्ष्य क्वांटम क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरना है। Niti Aayog's Frontier Tech Hub, in collaboration with IBM, has released a strategic quantum roadmap. नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने IBM के सहयोग से एक रणनीतिक क्वांटम रोडमैप जारी की है। The roadmap targets making India one of the top 3 quantum economies by 2047. इस रोडमैप का लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है। Which AI company launched the Gen 4.5 text-to-video generation model? इस AI कंपनी ने Gen 4.5 text-to-video generation model launch किया। So the option C, Runway. Important points. New York-based AI company Runway launched Gen 4.5, its most advanced text-to-video generation model.
न्यूयॉर्क स्थित एआई कंपनी रनवे ने अपना सबसे उन्नत टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल जेन 4.5 लॉन्च किया है। Announced on December 4, 2025, Gen 4.5 claims the top global position in video AI. 4 दिसंबर 2025 को घोषित जेन 4.5 ने वीडियो एआई में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान का दावा किया है। It is rated higher than Open's AI Sora 2 and Google's Veo 3. इसे OpenAI के Sora 2 और Google के Veo 3 से बेहतर रेटिंग मिली है। The successful high-speed trial conducted by DRDO was related to which system? DRDO के द्वारा आयोजित सफल हाई स्पीड परीक्षण किस प्रणाली से संबंधित था? Yeah, so the option B is correct. That is fighter jet escape system. लड़ाकू जेट की बचाव प्रणाली. Let's discuss more about this. DRDO successfully conducted a high-speed trial of an indigenous fighter jet escape system. DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू जेट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया. The test provided smooth canopy separation and precise ejection sequencing. इस परीक्षण ने सुचारू कैनोपी पृथक्करण और सटीक निष्कासन अनुक्रमण को प्रमाणित किया. It ensures safe crew recovery and enhancing pilot safety. इससे चालक दल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई और पायलटों की सुरक्षा में सुधार होगा. The achievements strengthen India's self-reliance, आत्मनिर्भर भारत in advanced defense and aerospace safety technology. ये उपलब्धि उन्नत रक्षा और एरोस्पेस सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करती है. Next, the question we have is ACEN, India's first private sector navigation center, was inaugurated by whom? भारत के पहले निजी क्षेत्र के नौवहन केंद्र ACEN का उद्घाटन किसने किया? The correct option we have is option B, V. Narayanan. ISRO Chairman V. Narayanan inaugurated ACEN, Anand Center of Excellence for Navigation in Thiruvananthapuram, India's first private sector navigation center. इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नौवहन केंद्र ACEN का उद्घाटन किया. The center makes a major milestone in indigenous navigation technology development. यह केंद्र स्वदेशी नौवहन प्रौद्योगिकी विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है. ACEN will enhance defense preparedness and support space as well as civilian application. ACEN रक्षा तैयारियों को बढ़ाएगा और अंतरिक्ष के साथ साथ नागरिक अनुप्रयोगों का भी समर्थन करेगा. So that's all for today, everyone. Thanks for watching. This will going to help you a lot in revising the complete science and technology news for the entire month of December 2025. And there is a explanation so you can make a short notes with that for those who are preparing for the mains examination. Requesting you all to please subscribe my channel so that you will get the notification for my next video. Tomorrow we'll be having a video for the December 2025 awards and order, complete awards and order news with the help of MCQs and explanation. So please subscribe my channel and so you'll get the notification. We're going to meet soon tomorrow. Thank you all. Bye.